Jai Hind, dear students of class 10th, welcome in geography class. As per as concerning this year, chapter minerals and energy resources will not be evaluated in board examination, but the map work of this lesson will come certainly. So to prepare map work, it is important to know the outline of the lesson. Without knowing outline of the lesson, it will be difficult to locate properly the reserves of minerals. So today I am going to start the lesson minerals and energy resources, and listen, I am repeatedly telling to you that the map work of this lesson will come in board. Clear it is? बोर्ड में इसका मैप वर्क आएगा, जबकि रिटन में इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन मैप को करने के लिए उसका आउटलाइन समझना भी बहुत जरूरी है. वी आर हैविंग टाइम, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द लेसन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. We all know that without minerals and energy today, we can't imagine the life. For the growth and development of mankind, we need industrialization. And all industries are based on availability of minerals and energy resources. That common term asks, what is a mineral? Mineral hota kya hai? So simply said, a mineral is a natural substance of organic or inorganic origin having with definite chemical and physical properties. मिनरल को कैसे डिफाइन करेंगे? मिनरल को सिंपली डिफाइन करेंगे, a mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties. As far as concerning your book, this type of definition is there. Otherwise, geologists believe that minerals are formed by inorganic process. But for the sake of convenience, for the easiness in geography, we believe that fossil fuels, they are also mineral. But in geology, they treat fossil fuel as a separate, not as a mineral. We use different things in our daily life. It is right. And many of them are made up of minerals. Minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything you use, from a teeny pin to a towering building, a big ship to all, made from minerals. एक छोटे से पिन से लेके एक टावर, बड़ी से बड़ी मशीन या कोई शिप, हर चीज मिनरल से बनी हुई है. The railway lines and the tarmac of the roads, our implements and machinery too are made up from minerals. Car, buses, trains, aeroplanes, everything. So you can imagine now how important these minerals are in our life. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. It is said that all living things need minerals. Life processes cannot occur without minerals. Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of the nutrients. जो हम खाना लेते हैं, खाते हैं जीने के लिए, उसमें मिनरल का क्वांटिटी बहुत कम होता है, 0.3% only. They are so potent and so important that without them we would not be able to utilize other 99.7% of the foodstuffs. So all living things needs minerals for survival, because our foodstuff, they are digested because of the minerals availability in them. 99.7% foodstuff digested due to 0.3% of minerals. So what is a mineral? Very first I have quoted, mineral is a natural substance of organic or inorganic origin having definite chemical and physical properties. But what is a mineral as geologists define? Geologists define mineral as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. Geologists कहते हैं mineral क्या है? Homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure.
इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सके. Minerals are found in varied forms in nature, ranging from hardest diamond to softest tell. Here, two MCQ questions are here. Whether it will not come in your board examination, but you must know that the hardest mineral is the diamond and the softest is the tell. Talc stone और soap stone, ये सबसे सॉफ्टेस्ट होता है जिससे हम लोग बनाते हैं टेल्कम पाउडर. There are various types of minerals on the earth surface. You have already learned about the rocks. What are rocks? Rocks बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. But होता क्या है? What is a rock? If you have to define rocks, what will you define? Simply, rocks are a combination of homogeneous substances called minerals. Simply said, solid aggregate of minerals is known as rock. बहुत सारे मिनरल के सॉलिड एग्रीगेट को मिलने से सॉलिड एग्रीगेट बनता है, उसको हम रॉक बोलते हैं. Some rocks, for instance, limestone consists of single mineral only. It is again very important question for competitive exams कि कौन सा एक रॉक है जो केवल एक ही मिनरल से बना है. This is the limestone. But majority of rocks consist of several minerals in a varying proportions. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in the most of the rocks. Particular mineral that will be found from a certain combination of element depends upon physical and chemical condition under which the mineral forms. In turn, results in wide range of colors, hardness, crystal form. We know that minerals have different colors, hardness is different, crystal form is different, luster, density, etc. All they are different, and geologists use these properties to classify minerals. Minerals को स्टडी एक्चुअली जो साइंस करती है उस साइंस के ब्रांच का नाम क्या है? जियोलॉजी. और उसको करने वाले लोगों को लोग बोलते हैं जियोलॉजिस्ट. क्लियर? देन why there is a need to study mineral in geography? Yes, question arises here. Geographers study minerals as a part of the earth crust for a better understanding of landforms. Geographers study करते हैं minerals का. क्यों करते हैं? As a part of earth crust for better understanding of landforms, the distribution of mineral resources and associated economic activities are the interest of geographers. Geographers का main interest क्या होता है? Distribution of mineral resources and the associated economic activity. कौन से मिनरल कहाँ मिलते हैं और उससे रिलेटेड कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप हुई है. अकॉर्डिंगली दे आर हैविंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट. बट अ जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल. और जियोलॉजिस्ट किसमें इंटरेस्टेड होता है? मिनरल कैसे बना, उसका एज क्या है, उसकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है. क्लियर? हाउएवर फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पसेस minerals can be classified as I told you earlier that a mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical property. But geologists believe that they are found by inorganic process. For general and commercial purpose, we can classify minerals under the following heads. Listen, mineral. First, we classify them into three categories: metallic minerals, non-metallic minerals, and energy minerals. Further, there are three divisions of metallic minerals. Ferrous minerals. Ferrous minerals means which contain iron in them, like the iron ore itself, iron होता है. Manganese, it contains iron. Nickel, cobalt. दूसरा non-ferrous, जिसमें आयरन नहीं होता है, like copper, lead, zinc, bauxite. और तीसरा precious, बहुत कॉस्टली जो होते हैं, like gold, silver, platinum, etc. Non-metallic mineral like the mica, salt, potash, sulfur, granite, limestone, marble, sandstone, all these are example of non-metallic minerals. And the last category is called energy minerals. Generally, geologists define it as fossil fuels like coal, petroleum, and natural gas. But all the minerals are not found everywhere. They are not found in the same way. Their mode of occurrence are different.
So usually it is said that minerals are usually found in ores. It is said that all ores are minerals, but all minerals are not ores. Then what is ore? The mineral from which metal can be extracted profitably and easily is called an ore. Like hematite is a ore of iron. और क्या होता है जिससे मेटल निकाला जाता है प्रॉफिटेबली एक्सटेंसिवली, उसको और बोलते हैं. The mineral content or the must be sufficient in its concentration to make its extraction commercially viable. और एक जगह मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि उसको इकोनॉमिकली फायदेमंद हो निकालना. The type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with mineral ores may be mined. किस तरह के मोड में मिलते हैं मिनरल, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन. और वहां से निकालने का कॉस्ट क्या है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ऑल सच वी हैव टू सी. इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ formations in which minerals occur. First, I am going to discuss about veins and lodes. These are the two new words for you. V-E-I-N-S. V-E-I-N-S. Veins. L-O-D-E-S. Lodes. Veins and lodes. Generally, what happens in igneous and metamorphic rocks, minerals may occur in cracks, crevices, faults, or joints. The smaller occurrences are called veins and the larger are called as lodes. तो igneous और metamorphic rocks में जो minerals मिलते हैं faults में, joint में, cracks में, उसको हम जनरल अगर छोटा होता है उसका डिपोजिशन स्मॉलर होता है तो veins बोलते हैं, और जब larger होता है तो क्या बोलते हैं, lodes. In most cases they are formed when mineral in liquid, molten or gaseous form are forced upward through the cavities toward the earth surface. जमीन के अंदर जैसे अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है. After a certain depth, everything is in liquid form. When minerals in liquid form are forced upward to reach the earth's surface, they cool and solidify as they rise. जैसे जैसे ऊपर आते हैं इनकी कूलिंग होती है और solidification होती है. And most of the metallic minerals like the tin, copper, zinc, lead, etc. are obtained from veins and lodes. ये पहला मोड ऑफ ऑकरेंस है, veins and lodes. Second, in sedimentary rocks, a number of minerals occur in bed or layer. Sedimentary rocks तो layer by layer बनती है. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration of horizontal strata. और जो बार बार लगातार डिपोजिशन होता है और उससे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा बनते जाते हैं और उसका कॉम्पैक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन. Coal and some forms of iron ore have also been concentrated as a result of long period after under great heat and pressure. And another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt and sodium salt. Clear? They have been formed because of process of evaporation. So this group of sedimentary minerals also known as evaporites, as they have been formed as a result of evaporation. Another mode of formation involves the decomposition of surface rock. Surface rock टूटती है, decomposition उसका होता है, and the removal of soluble constituents. और जो constituents soluble होते हैं पानी के साथ धुल के निकल जाते हैं, leaving a residual mass of weathered material. और वहाँ जो रुका रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं residue or residual mass of weathered material which contain ores. Bauxite is formed in this way. Bauxite इसी तरह बना है. Certain minerals may occur as alluvial deposits in sands of valley floor and the base of hills. These deposits are called placer deposits. Suppose there is a high mountain and some minerals were there because earth has formed in different geological ages, different landform has come in existence. So minerals are there at the top reaches of the mountain, but what happened? Certain minerals may occur as alluvial deposit in sand. How? They are eroded from their original surface and deposited
here and there in the alluvial plains. These deposits are called placer deposits because they are deposited place to place, one place to another place, generally contain minerals which are not corroded by water. और कौन से मिनरल इसमें मिलते हैं जो कि वाटर से जिसका कोरोजन नहीं होता है, like the gold, silver, tin, platinum, all these are costly. And the last category, the ocean water. It also contains ocean water that is known as storehouse of minerals. Vast quantities of minerals are found over there in oceans, but most of these are too widely diffused to be economic significance. लेकिन ये पानी में इतनी तरह अच्छी तरह से डिसॉल्व्ड है, इसको निकालना मुश्किल है. Only some common salt, magnesium and bromine, we are largely derived from the ocean water. The ocean beds too are rich in manganese nodules. As in first lesson, you can recall, India has got permission to mine manganese nodules beyond the exclusive economic zone in the Indian Ocean. Indian Ocean में जो manganese nodules, ये nodules कैसे बनते हैं? Because some minerals precipitate and they contain minerals in them. Precipitate करके जब उसके बेड पे मिल रहे हैं इंडियन ओशन के मैंगनीज नोड्यूल्स, इंडिया को परमिशन मिला हुआ है उसको माइन करने के लिए. तो आई एम टेलिंग यू अबाउट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफ मेघालय. इन मेघालय कोल इज फाउंड एंड देयर इज अ टाइप ऑफ माइनिंग कॉल्ड रैट होल माइनिंग इज ऑल्सो फाउंड. माइनिंग करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन एक माइनिंग का तरीका वहां पे बोलते हैं रैट होल माइनिंग. Do you know that most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after the obtaining permission or due permission from the government. बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी मिनरल नहीं निकाल सकता है. बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली इन मेघालय, मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज. वहां के पहाड़ों के मालिक मिलेंगे आपको. जनरली पहाड़, मिनरल का एरिया, ये सब नेशनलाइज है, लेकिन वहां अभी भी कम्युनिटीज या इंडिविजुअल की तरह ओन्ड है. इन मेघालय देयर आर अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट. कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर्स. जोवाई और चेरापूंजी में फैमिली मेंबर्स आपस में मिलके क्या करते हैं, कोयले की खुदाई करना शुरू करते हैं और बिल बनाते हुए, जैसे चूहा मिट्टी निकालते हुए बिल बनाते हुए अंदर जाता है, ये कोयला बाहर निकालते हुए बिल बनाते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं. इसको जनरली इससे क्या होता है, फॉर्म अ लॉन्ग नैरो टनल. इसमें एक अंदर पतली सुरंग बन जाती है. दैट इज व्हाई कॉल्ड रैट होल माइनिंग. चूहे की तरह मिनरल को बाहर निकालना, जैसे चूहा मिट्टी निकालता है, इसको हम लोग बोलते हैं रैट होल माइनिंग. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Everybody should know about this. India is a country. In class 9th you have studied what the present shape and size of our country we are looking. It was not the same in past. I am not talking about few thousand years. I am talking about the geological past. For million and billion of years I am talking about. India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. No doubt. India is a country of diversity. We are having diversity in our cultural landscape as well as in our physical landscape. We are having diverse type of flora and fauna. We are having also varied type of mineral resources too. However, these are unevenly distributed. It is one characteristic of mineral. Minerals are not found equally everywhere. They are unevenly distributed, no doubt. It is a truth. Broadly speaking, Peninsular rock contains most of the reserves of coal, metallic mineral, mica and many other non-metallic minerals. अगर बात करते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक की, जो कि ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, सबसे अधिक कोल, मेटालिक मिनरल, माइका और मेनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स का डिपोजिशन वहां पे मिलता है, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेटू रीजन. इट इज known for the heavy deposition of coal and iron ore and other metallic minerals. Sedimentary rocks on the western and the eastern flank of the peninsula in Gujarat and Assam have the most of the petroleum deposits. गुजरात में और असम में पेट्रोलियम डिपॉजिट है. Beside this, in Mumbai High offshore region, it is in sea. Mumbai High
समुंदर में के करीब मुंबई से 60 या 65 किलोमीटर दूर अंदर समंदर में है, वहां भी पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया इज ग्रीन जोन having fertile alluvial soil, having lot of fertility of soil, provide us a lot of food, so known as granary of India, but it is almost devoid of economic minerals. यानी नॉर्थ इंडिया में मिनरल्स का अभाव है। These variations exist largely because of the differences in geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. ये सभी differences जो हैं और जो मिलने का क्रम है, जो कोई मिनरल कहीं मिल रहा है, दूसरा मिनरल कहीं और मिल रहा है, ये सब डिफरेंसेस किसके वजह से हैं? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के और इसके प्रोसेस और इसके बनने के तरीकों से। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू सम मेजर मिनरल्स इन इंडिया। हम लोग कुछ बात करते हैं कुछ एक मिनरल्स के बारे में। सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मोर देन 2000 ऑफ टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर। हाउ मच यू कैन प्रिपेयर? So only few important minerals we have to discuss. Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic variability of a reserve. When it is marked that at a particular place this mineral is found, then we first survey it, यहाँ पे मिल गया, then we estimate the quality and quantity of it. Then we find the suitable institution, whether extraction is costly or less costly, or it will be beneficial or not, everything. Then after only we are going to extract the minerals from the reserves. Thus, to meet the demand of choice, it is made between the number of possible options. When it is done, a mineral deposit or reserve turned into a mine. जब पता चल गया है मिनरल है तो उसको रिजर्व बोलते हैं या डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन जब उसका एक्सट्रैक्शन शुरू हो गया तब उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? माइंस, खदान बन गए। फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज द फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 of the total value of production of metallic minerals. They provide a strong base for the development of metallurgical industry. नाम सुनो metallurgical, METALLURGICAL, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। धातु विज्ञान जिसको बोलते हैं, और धातुकीय अभियांत्रिकी बोलते हैं इंजीनियरिंग को, और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को बोलते हैं जो इंडस्ट्री धातु बनाती है। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। इंडिया में फेरस मिनरल्स का बहुत ह्यूज रिजर्व है। एज आई हैव टोल्ड यू, फॉर अबाउट 3/4 of the total value production of the metallic minerals. इंडिया में आयरन ओर का जबरदस्त भंडार है जिसका हम लोग अपना इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारा एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द आयरन ओर। इन नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट द आयरन ओर, बट हियर आई एम रिपीटिंग वन थिंग once again. The lesson will not be subjected for written में नहीं आएगा बोर्ड में for evaluation, but the entire map work of this lesson will come in board examination. So it is important to go through the lesson, and then after I will send you the main map work which will come in board examination. So I think you have enjoyed the class today. Thank you. Have a nice day.